ओके स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 रिलेशन एंड फंक्शन। ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से ऑलरेडी किए हैं, सो लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव, शो दैट root 1 plus sin x 1 plus sin x divided by 1 minus sin x is equal to secant x plus tan x. So ये हमें प्रूव करना है. So this is my left hand side and this is my right hand side. So in this question I will take the, so I will solve this and I will take left hand side. So left hand side को मैंने लिया और left hand side क्या है, 1 plus sin x divided by 1 minus sin x. Okay, right? So अब जो डिनोमिनेटर है 1 minus sin x, इसको करेंगे रैशनलाइज. सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. सो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में साइन को चेंज करेंगे. सो कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स, इसको एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. अब ये डिनोमिनेटर में ऑलरेडी इसको पूरा रूट में करते हैं. सो इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, साइन चेंज हो गया, रैशनलाइज करने के लिए साइन चेंज हो गया. 1 माइनस साइन एक्स था तो रैशनलाइज करेंगे 1 प्लस साइन एक्स हो गया. सो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स. सो बच्चों हमने क्या किया, इसमें डिनोमिनेटर को, ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज करने में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक बार इसके अपोजिट से 1 प्लस साइन एक्स से, और एक बार इसको डिवाइड करते हैं 1 प्लस साइन एक्स से. सो दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. बस अब मामला इजी है, अब इसको सोल्व करते हैं. सो ये हो जाएगा, नाउ दिस बिकम्स 1 plus sin x into 1 plus sin x. So this becomes 1 plus sin x whole square. 1 plus sin x whole square divided by 1 minus sin x 1 plus sin x. So ये फार्मूला हो गया a minus b into a plus b. It is equal to a square minus b square. सो ऐसे इसको करेंगे. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो क्या होगा ये, दिस इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स. सो 1 स्क्वायर बेसिकली दैट इज 1 स्क्वायर इज 1. सो अब इसको लिख सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर divided by 1 minus sin square x, right? So 1 minus sin square x, basically this is called cos square x. So इसको लिखेंगे root 1 plus sin x का whole square, and this is called 1 minus sin square x, this is called cos square x. So इसको अब अलग से लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट कोस स्क्वायर एक्स. सो यहाँ हम इस रूट को इस स्क्वायर से कैंसिल करेंगे, ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल करेंगे. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस साइन एक्स divided by cos x. So this can be written as sorry, this is 1 plus, this is 1 plus, this is 1 plus, this is mistake, 1 plus. Now
This can be written as 1 upon cos x plus sin x upon cos x, sin x upon cos x, cos x. Now we know that 1 upon cos x, this 1 upon cos x, this is called secant x. So this is called secant x. And sin x upon cos x, this is called tan x. This is called tan x. So यही हमें निकालना था. ऑलरेडी हमारे पास राइट साइड में secant x plus tan x है और हम यहाँ पे भी secant x plus tan x निकाल चुके हैं. So hence left hand side is equal to right hand side, and hence proved. We can take right hand side also और उसको सोल्व कर सकते हैं लेफ्ट हैंड के लिए, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड को सोल्व करना, राइट हैंड साइड के लिए सोल्व करना, दैट इज मच इजियर. सो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि हम हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें. वी कैन टेक एनी वन साइड, दैट इज आवर चॉइस, बट हमें ये देखना है कि कौन सी साइड को सोल्व करना इजी रहेगा. ओके, so we can say that root 1 plus sin x over 1 minus sin x, it is equal to secant x plus tan x. So let me take another question. Okay, so let us go for the second question. Show that secant x minus tan x, secant x minus tan x whole square, this is whole square, sorry, this is secant x minus tan x, this is secant x minus tan x whole square, it is equal to 1 upon cos x minus sin x upon cos x, and this is also whole square, this is also equal to whole square. So ये हमें प्रूव करना है, सॉरी ये हमें प्रूव करना है, नो, दिस इज नॉट द क्वेश्चन. हमें प्रूव करना है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है secant x, ओके, हमें प्रूव करना है secant x minus tan x whole square, it is equal to 1 minus sin x or 1 plus sin x, ये हमें प्रूव करना है. So let me take this left hand, this is my left hand side and this is my right hand side. So I will take the left hand side and secant x minus, so secant x, it can be written as 1 upon cos x minus tangent x, it is sin x upon cos x, and whole square, it is whole square. Now take the LCM, so we get cos x, and this is basically this is cos square x, 1 minus sin x and whole square. अब इसका whole square ही रखेंगे. So अब इसको लिख सकते हैं हम 1 minus सेपरेटली स्क्वायर लिख सकते हैं 1 minus sin x, और इसका होल स्क्वायर है डिवाइड बाय cos square x. So अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 minus sin x को तो ऐसे ही लिखेंगे हम 1 minus sin x का स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही एज इट इज लिखा, एंड cos square x that is equal to 1 minus sin square x, because कैसे sin square x plus cos square x is equal to 1. So हमें कैलकुलेट करना है cos square x, so cos square x is equal to 1 minus sin square x. तो यहाँ पे हमने cos square x के लिए प्लेस किया. नाउ अब इसको सोल्व करते हैं.
1 minus sine x whole square, 1 minus sine x whole square divided by 1 minus sine square x. So this can be written as 1 square minus sine square x. So this is equal to a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. So इसको हम लिखेंगे a minus b into a plus b. So now this becomes 1 minus sine x and 1 plus sine x. Now 1 this 1 minus sine x, एक 1 minus sine x ये cancel हो जाएगा यहाँ पे. So we are left with 1 minus sine x divided by 1 plus sine x. So this is my right hand side. So hence it is proved. Hence it is proved. So students, we will solve few more questions in our next lecture. Thanks for today.